Hello everyone. Today's session we are going to discuss food chain and food web, class 10 CBSE, our environment. Guys, you are already known of this food chain and food web. They have three chains described in figure number 15.1. Chain means connecting each other. For example, there are forest and grassland and pond. There have three main chain described here. A is a forest chain. This is the forest primary consumer plant and secondary deer and third tiger. Means tiger is alternately dependent of the plant and plant is the primary producer. This is the consumer. All consumer dependent of the producer. There have B the grassland is also dependent of the each other, and they have pond also dependent on each other, means all food chain dependent on each other, and this green product means plant is the primary consumer, primary producer of this all chains. What is mean by chain? What is mean by chain? Food chain or energy can be transferred from one organism to other throughout food chain. Means all food chains begin with the green plant is called at original source of all foods. It is called to green plant. The sequence of living organism in commonly in which one organism consumer another organism to transfer food energy is called food chain. A simple word list of organism living being showing who eats whom is called to food chain. For example, ignore care by taking example from simple pond chain operating the grassland and forestland also. Grass means the primary producer, deer herbivorous secondary producer, and lion carnivorous third producer. It's called the grass also insect, frog, birds, all deer, lion connecting each other, means a food chain represents a single directional transfer of energy. Study of food chain in habitual helps the knowing various interaction among the different organisms and is the interdependence. For example, in your NCERT notebook, various biotic level form food chain, each step or level of the food chain from the trophic level. Every level are a trophic level. In trophic level can be transfer energy first level to next level. Autotrophic from the producer are the first trophic level, means to green plant. Green plant is the first trophic level. Then fix up the solar energy and make available from heterotrophic or the consumer, means autotrophic plant can be consumer their own food by energy in sunlight uses in photosynthesis, and fixed solar energy can available from to heterotrophic and consumer. The herbivorous on primary consumer come at a second, that is the herbivorous, it is a second consumer. Herbivorous primary consumer come out second, small carnivorous or secondary consumer third, large carnivorous and tertiary consumer from the fourth trophic level. The all trophic level are important from this food chain. We know that the food we eat act fuels provide us energy to do works. Every work done can be need from some energy, and every trophic level transfer energy in a next trophic level. That is the rules of energy transformation. They have create 100% energy to acquire 100% but transfer only 10%. So the quantity of this level
is decreasing by to buy. Means tiger is very low quantity compared than the plant compared than the deer because only 10% energy flow to next level. We know that food we eat act and fuels to provide us the energy to do works. This interaction among various component environment involve flow energy from to component of the system to another. As we have studied, the autotrophic capture the energy present in sunlight and convert into the chemical energy. The energy support all activity of living worlds. From autotrophs, energy goes to heterotrophs and decomposer. However, as we saw in previous chapter, the source of energy, when one form energy is changed to another, some energy is lost of this environment in form of cannot be used to again the flow energy between components of environment. It's been extensively studied in this had been the found of the green plant terrestrial ecosystem capture about 1% energy sunlight that fall their leaves convert into food energy. When green plant are eaten by primary consumer or great deal energy is lost at heat environment some amount of goes digestion and doing work interest goes toward the turns into the own body and made available from next level consumer. Therefore, 10 can be as average value of amount organism organic matter is this present step reaches the next level of consumer. यहाँ पे तुमको ये बताया हुआ है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो 100% अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सनलाइट बट इन्वायरमेंट का कुछ ऐसे जो बातें होती है तो उसको इन्वायरमेंट के साथ में मेंटेनेंस करना पड़ता है तो अपने पास किसी वो 10% एनर्जी ही दूसरी जो लेवल है अपनी एनर्जी लेवल है इसको अपन टिपिकल लेवल बोल रहे हैं जो अपना ट्रांसपोर्टेशन लेवल है उसमें 10% एनर्जी ही वो ट्रांसफर कर रहे हैं बाकी जो एनर्जी है वो 90% एनर्जी खुद यूज करना पड़ रहा है उसको तो समझ लो यहाँ पे कि प्रोड्यूसर 100% है 100 की 100 वो प्राइमरी कंज्यूमर को देगा लेकिन 90% अपने पास रखेगा प्राइमरी तो अपना 10% सेकेंडरी को देगा 10 का 100 बना के सेकेंडरी अपने पास रखेगा और सेकेंडरी में से 10 जो है टर्शियरी कंज्यूमर में जाएगा मतलब कि एनर्जी जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है तो एनर्जी अवेलेबल नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर ऑफ चेन जनरली कंसिस्ट ओनली 3 और 4 स्टेप इसीलिए अपना जो चेन है 3 या 4 स्टेप का ही रहता है क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी चेन वैसे वैसे लॉस होती जाती है एनर्जी ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेस ऑफ एनर्जी रिमेन फ्रॉम 4 टॉपिक लेवल ऐसा क्वेश्चन तुमको आ सकता है कि एनर्जी की जो चेन है फूड चेन 3 या 4 लेवल तक की क्यों है बिकॉज every level have only 10% energy transfer to next level in a last 3 stage and last 4 stage very uh, less energy rest there so that's why the energy chain food chain only one or 3 or 4 levels there are generally greater numbers individual from lower trophic level and ecosystem the greatest number is one of the producer length and complexity of food chain vary greatly each organism generally eaten by 2 or more kind of organism in which turn eaten by several other organisms. So instantly line food chain. Relationship can be shown in series branches is called to food web. अब ये फूड चेन होगा फूड चेन में कैसे होता है एक ही डायरेक्शन में रहते हैं लेकिन अभी फूड वेब हम देखने जाएंगे आगे तो फूड वेब का थोड़ा अलग होता है फूड वेब मतलब क्या है कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन operating in an ecosystem established network relationship between various species is called to food chain various species जैसे कि देखो अभी जो प्राइमरी कंज्यूमर में अगर रैट होगा रैट को कैट भी खा सकती है स्नेक भी खा सकता है एनी अदर कोई बर्ड भी खा सकेगा उसको तो मतलब कि देखो रैट ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर डिफरेंट टाइप्स के उसको खा सकते हैं तो ये जो चेन है वो इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क की रिलेशनशिप में आ जाती है और नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर चेन एग्जिस्टिंग ऑफ इकोसिस्टम कॉल टू फूड चेन और लार्ज नंबर ऑफ अपना बन जाता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं आगे चल के और वो अपना देखो इस तरीके से हम वहाँ पे तुमको शो करेंगे
यहाँ पे देखो अल्टरनेटली एरो दिखाए हुए हैं, मतलब कि ये जो रैट है उसको खाने वाले बहुत सारे, कैट भी दिखाया है, ये बर्ड भी है, स्नेक भी है। अल्टरनेटली इसको खाने वाले बहुत सारे रहते हैं। देखो फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, ये बर्ड भी खा सकता है। तो ऐसे इस तरीके से अपना फूड वेब बन जाता है। न्यू डायग्राम फूड वेब की। हर्बिवोरा डू नॉट हैव कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। तो हर्बिवोरा जो है वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और सेकंड लेवल से आगे बढ़ते जाते हैं। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट फ्रॉम फूड चेन, हाउ unknowingly harmful chemical enter bodies those food chain you have read the class 9। तो ये चेन अपना अच्छे से बना रहेगा, एक्वेटिक प्लांट का है या इन्वायरमेंट का है, तो हम लोग उसको पूरी तरह से डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि इसको सनलाइट, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, हर्बीवरस मतलब कि प्राइमरी लेवल, एक कॉर्निवस सेकंड, और जो टॉप कॉर्निवरस है जिसको हम टर्शरी लेयर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। And animal is one of the way their entire food chain, as these chemicals are not degradable, they are accumulated progressive at each trophic level. As human being a copy top level in any food chain, maximum concentration of this chemical get accumulated in our bodies, phenomena as known as biological magnification. A reason why our food grain as so wheats and rice, vegetable and fruits and even meats containing varying amount of the pesticides residue, they can be always removed by washing or other means। तो ह्यूमन बीइंग इस लेवल में टॉप पे रहता है। तो इस तरीके से हम लोग आज फूड वेब और फूड चेन क्या है उसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देखें।